खुद की कमियां भी पता चलती हैं through the journey. So वो भी पता चली. Whatever I did, no matter what people inside said, was entertaining. If you cross that, it's no longer entertaining for certain people. So how are you, Abhinav? And it's good to have I'm you good. here on. Thank you. Thank you so much. All right, Abhinav, if we talk about your journey in the Big Boss house, how has it been? We have seen it on television, but on personal level, आपके लिए कितनी challenging रही? क्या खोया, क्या पाया? Please बताइए. Okay, so challenging, I would say not in terms of like the only challenge was to deal with people, deal with so many people talking so much with an intention to hurt you or to make you feel that you're not worth it. That was the challenge. Task wise or the hardship of living, like that wasn't much challenging. Journey, kya khoya, kya paya. So I don't think I've lost anything more than like 10 kgs of my weight. And kya paya mein, I think I have become out wiser, a little more, smarter in dealing with, issues which people create. I insist more now. I don't walk away from arguments like earlier, which I used to do. So I've become less of an escapist. And I've come out with, much more confidence than I went inside that, that I'm real. And whatever I did, no matter what people inside said, was entertaining. A certain section of audience, for a lot of audience, it was entertaining. And that makes me feel happy. On that note, Abhinav, राखी के साथ जिस तरह का इक्वेशन था घर के अंदर, I'm sure आपके लिए भी आपको भी वही लगा होगा कि वो एंटरटेनमेंट निकल कर आएगा. But at some point of time, do you really, kind of, did you regret, giving that space to Rakhi? Yes, kind of. Like initially, of course, she was entertaining. The kind of stuff she used to say, like we used to laugh throughout the day. But then wohi hai ki, this is like a common saying in all, people who are entertainers and comedians or stand-up comedians, that there's a very thin line. If you cross that, it's no longer entertaining for certain people. And when that line was crossed, of course, it wasn't entertaining for me. And I do regret that, I should have, I don't know, more forcibly, more convincingly, I don't know what way I should have told her ki that is it. Right. वहीं पर्सनल फ्रंट की अगर बात करें तो जिस वजह से आप गए थे घर के अंदर, एक तो था रुबीना के साथ जो रिश्ता था, वो वी आर रियली हैप्पी दैट यू गाइस हैव कम आउट स्ट्रॉन्गर. बट उस चीज को लेकर क्या कहना चाहेंगे, उस चीज की जर्नी कैसी रही? देखिए वो काइंड ऑफ आई न्यू दैट मैंने रूबी को भी जोकिंगली बोला था दैट आवर फाइट्स विल बिकम स्मॉलर इन फ्रंट ऑफ द फाइट्स व्हिच यू विल सी इनसाइड द हाउस. एंड स्वाभाविक सी बात है, वील वॉच ईच अदर्स बैक जब हम अंदर जाएंगे, और वही हुआ. एंड खुद की कमियां भी पता चलती हैं थ्रू द जर्नी. सो वो भी पता चली. सो इट वाज अ विन-विन सिचुएशन, व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप. तो जिस वजह से वो जो झगड़े होते थे रुबीना के साथ, अब वो वजह बदल गई है कि वो इट्स द सेम. आई रेड समवेयर इट वाज बिकॉज़ ऑफ कॉफी दैट यू गाइस यूज्ड टू फाइट, एंड दैट आई रियली वांट टू नो व्हाट वाज द रियल रीजन. See, there was no like specific, there were like difference of opinion on many things. And yes, that coffee incident was one. So there was nothing big as such, but choti cheezein, it becomes like it snowballs. That's what happened. So now we have learned that, whenever there's a small thing, resolve it. Never go to bed like angry or, without a closure. So that's what we have learned, and that's what we're going to apply actually. घर के बाहर आकर किसके साथ रिश्ता निभाने वाले हैं अभी? Rishta, as in like I've made friends
नैना है, शार्दुल है, राहुल महाजन है, सारा गुरपाल है, शहजाद है, ये सब मतलब these are the people I bonded well with. और ये लोग थे जिनको I kept on missing them when they were not there. So yes, and I'm in touch with them. We like met a couple of days ago. So we'll stay in touch for sure. And what about Ali, Jasmine and Rahul? So of course I'm not friends with Rahul. And about Ali, I think as of now is out of town. So he's a nice kid, like, I like him. So that's... So वो जो ऐसे are you that kind कि घर की बातें घर के अंदर, अब बाहर आकर you guys will be friends and you'll forgive whatever and forget whatever happened? See, एक चीज है कि जो भी पर्सनालिटी अंदर लोगों की दिखी वो उन्हीं की पर्सनालिटी है, वो किसी और की नहीं है. सो जज मैं कर चुका हूं कौन मेरा दोस्त बन सकता है, कौन नहीं. जो नहीं बन सकते वो नहीं बनेंगे. ऐसा नहीं है कि अब शो खत्म, चलो यार बाहर आओ, लेट्स सिट एंड रिजॉल्व. नहीं, क्योंकि अगर मुझे वो घर के अंदर नहीं समझ आए, उनकी पर्सनैलिटी नहीं समझ आई, उनका एटीट्यूड नहीं अच्छा लगा, तो क्या जरूरत है बाहर आके एक एफर्ट करने की, उनको जानने की. रादर आई फोकस ऑन पीपल हु आई लाइक, जिनके साथ मेरा एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बैठी, उनको और जानने की कोशिश करूंगा. सो आई लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ. बट येस, ऑफ कोर्स all the baggage has been thrown back in the house. मैं वहाँ सब उतार के आया हूँ. अभी I don't want to like talk bad about anyone or say anything extra. जो घर के अंदर था मैं उन्हीं के बेस पे उनको जज करूँगा. Okay, two things. Rubina won the trophy. How fair is that? Of course, we know it's fair here, but social media पर ऐसी काफी सारी बातें हो रही है कि राहुल were more deserving थे. Also, your eviction. वो कितना unfair लगा आपको? देखिए, whoever gets evicted will always think यार ये तो unfair हुआ मेरे साथ. I could have stayed a little more. I could have done little better. मेरे को एक और chance चाहिए. ये ऐसे ही होता है. I've been a part of many contests and I know this. Some people do get disgruntled, some people get negative, but this is the learning of life. Not everyone can win. हम तो यही सोच के गए थे ना कि एक आदमी जीतेगा. एफर्ट तो सबने किया. मैं नहीं बोलता किसी ने नहीं एफर्ट किया. Every contestant who came in the house did his effort. But जीतना एक नहीं था, वो पता था. वो क्राइटेरिया क्या होगा, देश को, दुनिया को, इस ऑडियंस को किससे प्यार है. And Rubina was there since day one. She never went out. जो भी उसको फीडबैक भी मिली, वो लोगों ने अपने हिसाब से दी. किसी ने शायद ही ऑनेस्ट फीडबैक दी, सबने अपने दिमाग लगाकर ऑनेस्ट फीडबैक ऐसे दी कि बाहर क्या चल रहा है इसको पता ना चले एक्चुअल में. सो एट द एंड ऑफ आई थिंक इन द 19th week it was just me and Rubina who had never gone out. We were the only two people who had no clue what's happening outside. So we were pure, organic, unadulterated. और हमारे दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि यार और क्या करें एक्स्ट्रा. हम जैसे थे हम वैसे ही थे. सो शी वॉज अ नेचुरल चॉइस. शी वॉज डिजर्विंग. एंड एनीवन हु सेज कि नहीं उसको नहीं जीतना चाहिए था, मुझे जीतना चाहिए था, आई थिंक द डे शी वॉज अनाउंस्ड द विनर, they got the reply. It was right in front of them. ये audience का फैसला है, which is that's what we work for. We are entertainers. We work for the audience, and they have given their decision. So I don't think there's any wisdom in challenging that.